हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और देख सकते हो इसी प्रकार से मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है मेरे चैनल पर। तो अगर आपको सारे नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे के सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे एट वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ द वर्ड सोल मीन्स ओनली and priority means owner. Full stop. The sole proprietor business is the business which is owned, managed and controlled by a single individual. Full stop. The individual is known as sole proprietor. Full stop. The entire profit belongs to him and for this he only has to bear all the risk too. उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी 5 यहाँ पे आता है, नॉर्मली 2015 में आया, 2016, 2019, 2022 में भी और 2024 में भी आ चुका है। द मेन फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और फार्म आर एज फॉलोज। नंबर 1, इंडिविजुअल ओनरशिप। A sole trade business is owned by one person. First off, there is no business associates or agents of the sole trader with whom he has to share his profits. First off, the owner spends his own money as capital. दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट हैव ए सेपरेट आइडेंटिटी इंस्टिंक्ट ऑफ इट्स ओन। फर्स्ट ऑफ, इन द आइज ऑफ द लॉ, ए सोल प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी। फर्स्ट ऑफ, हैंस सोल प्रोप्राइटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। नंबर 3 देख सकते हो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन सोल प्रोप्राइटरशिप the proprietor is personally liable for all the debts of the business. First of, in case of business losses, if the business assets are not sufficient to meet all business liabilities, the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liabilities. उसके बाद देख सकते हो वन मैन कंट्रोल। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द ओनरशिप एंड कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ, द ओनर कंट्रोल्स द बिजनेस हिमसेल्फ। फर्स्ट ऑफ, ही प्रिपेयर्स वेरियस प्लान्स एंड एग्जीक्यूट्स देम अंडर हिज ओन सुपरविजन। फर्स्ट ऑफ, इन स्मॉल बिजनेस ओनरशिप एंड कंट्रोल में रिमेन इन द सेम हैंड्स विथ हिज सेपरेशन इन पॉसिबल इन लार्ज स्केल बिजनेस। उसके बाद देख सकते हो इंडिविजुअल रिस्क। ऑल द रिस्क ऑफ द सोल ट्रेड बिजनेस आर बोर्न बाय द ओनर हिमसेल्फ। फर्स्ट ऑफ, सिंस ही हैज नो बिजनेस एसोसिएट्स ही कैन नॉट शेयर हिज रिस्क विद एनीबॉडी एल्स। द रिस्क फैक्टर विल ऑलवेज कीप द ओनर विजिलेंट एंड कॉशियस। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। द लाइफ ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर फार्म डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपेंस टू इट्स प्रोप्राइटर और ओनर। इन केस ऑफ डेथ, इंसेनिटी और बैंकरप्सी और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, द फार्म विल सीज टू एग्जिस्ट। उसके बाद देख सकते हो स्मॉल साइज। द सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म्स ऑपरेट ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। फर्स्ट ऑफ, एज ऑल द फंड्स आर अरेंज्ड बाय वन पर्सन, टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विथ वन पर्सन ओनली। फर्स्ट ऑफ, ए सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड हैज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, देयरफॉर द स्केल ऑफ द ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड। उसके बाद देख सकते हो फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। देयर मे बी a provision for taking a license etc. for starting some type of business, but otherwise there are no legal formalities for starting or closing this form of organization. तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे। तो आई होप को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।